In the last video, we discussed about octet rule. We talked about how atoms have a tendency to attain octet and thereby have a stable electronic configuration. In this video, we will talk a little bit more about this octet rule. So octet rule माने कोन having 8 electrons in the valence shell. अच्छा, एठी एबे गोटे जिंस बुझवा दरकार. Let me take an example to understand this. Suppose there is oxygen atom. Oxygen atom ro total electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. तो एथरे 1s टा हमर inner shell ताकू छाड़ दियो. 2s2 and 2p4 both of them belong to the second shell. एटा को हमें कहिबा oxygen रो valence shell. Now oxygen रो valence shell रे जो configuration देखुचो, if we represent that through a simple diagram, तो 2s ପାଇଁ गोटे बॉक्स बनेबा. 2p माने there are 3 orbitals in it, तो ता ପାଇଁ एमती तीनटा बॉक्स बनेबा. तो 2s2 is a pair of arrows like this. 2p4 केमती रहइबो 1 2 3 4. तो this is the configuration 2p4. तो this is the situation that you see in oxygen. अच्छा, एबे देखो ऑक्सीजन रे कोन हेची, जो इलेक्ट्रॉन गुडा को अनपेयर्ड स्टेट रे अछि, the electrons which are present as a single electron in an orbital, they are called unpaired electrons. Now these unpaired electrons are the electrons which are actually used for bonds. माने गोटे atom bond formation पाई ए electrons को use करिबो. तो ता माने जदि ऑक्सीजन रे दीटा unpaired electron अछि, that indicates oxygen can form two bonds. But ए दीटा electron को छाड़ी देले, there are also other electrons in the valence shell which are paired. The paired means there are two electrons in the same orbital, so तांकर spin quantum number opposite अछि. गोटे plus half spin रे गोटे minus half spin रे अछि. Such a pair of electron inside the same orbital is called a electron pair. So we can see there are two pairs of electrons also which are part of the valence shell. तो जदि इलेक्ट्रॉन गुडा को वैलेंस शेल रे पेयर्ड हेकी अछि, दे आर नॉट यूज्ड फॉर बॉन्ड. तो एई भलिया जो इलेक्ट्रॉन गोटे एटम रो वैलेंस शेल रे अछि बट बॉन्ड फॉर्मेशन रे यूटिलाइज होउनी, we refer to these electron pairs as a lone pair. Now coming back to the electrons which are used for bonds, सेथरे कोन हबो? तो ता पय म गोटे छोटिया लुईस डायग्राम यूज करबी. Oxygen has two lone pairs which are the paired electrons in the valence shell, and it has two unpaired electrons जोटा को से bond formation रे यूज करि पारिबो. तो जेतेबेले ऑक्सीजन ए इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन रे यूज करूची, one way of doing that is to share it with other atoms. तो धर मु गोटे हाइड्रोजन एटम नेली, तार गोटे इलेक्ट्रॉन अछि, तो ऑक्सीजन रो गोटे आ हाइड्रोजन रो गोटे ए इलेक्ट्रॉन दीटा जाक शेयर हेकी O and H तांका भितर गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हैला. तो सेमती आ गोटे हाइड्रोजन एटम नै कि तार जो इलेक्ट्रॉन अछि ताको भी ऑक्सीजन सहित शेयर करिकी we create a bond. Now when a bond is created by such sharing of electron, as you can see, there is again a pair of electron being used for bond. दीटा इलेक्ट्रॉन यूज करिकी हम गोटे बॉन्ड फॉर्म करूचे. एई टाइप रो बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड को जाय, जा विषय रे हमें नेक्स्ट वीडियो रे आहुरी डिटेल रे डिस्कस करिबा. Now coming back to this bond, the bond requires one pair of electron to form. So this pair of electron which is used in the bond formation process is called a bond pair. तो तामाने मु जदि एठी ऑक्सीजन अराउंड रे देखुची, ऑक्सीजन दीटा बॉन्ड फॉर्म करची, so it is associated with two bond pairs, and there are two other pairs which are not used in bonds, so oxygen has two lone pairs. So whether you refer to electrons as bond pair or as lone pair, they must be part of the valence shell. तो सेति पई bond pair and lone pair, they are collectively referred to as valence shell electron pairs. So whenever we talk about valence shell electron pairs, we refer to both bond pair and lone pair. तो एबे देखो जदि हमें ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन करबा को चाहूचे, हमकु वैलेंस शेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन दरकार. नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन 4 पेयर्स.
तो having octet means having 8 electrons or 4 pairs. तो এই जो चारिटा पेयर इलेक्ट्रॉन आमे कथा होचे, they can either be present as a bond pair or they can be present as a lone pair. कौन भी ही पारे. तो तामाने जदि आमे कहिबा octet माने कौन, ताकु तमे इलेक्ट्रॉन पेयर र टर्म्स रे बुझाओ, you would say total number of valence shell electron pairs must be equal to 4. तो से valence shell electron pair bond pair हेले भी चलिबो, lone pair हेले भी चलिबो, or it can be a combination of both of them. किछिटा bond pair थिबो, किछिटा lone pair थिबो, total pair चारटा हबा दरकार. That is what octet means. So we can say that octet simply means total number of bond pairs plus number of lone pairs combined must be equal to 4. तो जो एटम रे एई कंडीशन टा फुलफिल होउथिबो से एटम टा octet configuration रे अछि बोली हमें कहि परिबा. So like if we see one example, ए जो molecule टा में नेइथिले H2O रो, oxygen has 2 bonds with hydrogen and it also has 2 lone pairs. तो as you can see, oxygen रे bond pair, suppose bond pair को हमें BP लिखिबा, तो bond pair अछि दीटा because there are 2 bonds associated with oxygen. सेमती oxygen also has 2 lone pairs as you can see. एठी दीटा lone pair रहिछि. तो 2 plus 2 मिसिकी अछि 4. तो तामाने oxygen in this case has octet. So like that, if we know the distribution of bonds and lone pairs around a given atom, से atom टा octet configuration रे अछि ना नाही, से विषय आमे easily कहि देई परिबा. Let's see another example. Suppose a molecule of CH4 or methane. Methane रे there is a carbon atom which is bonded with 4 hydrogens. Methane रा structure तुमे class 10 ने मध्ये सिखिचो. So as you can see here, carbon is with 4 bonds. Now, carbon रा outermost shell रे केतेटा electron थाए? Carbon रा outermost configuration is 2s2 2p2. तो 2s2 2p2 माने it has 4 electrons in the valence shell. Now if it has 4 electrons in the valence shell and it has formed 4 bonds, तमाने each electron has been utilized in the bonds. प्रति इलेक्ट्रॉन यूज है कि गोटे गोटे बॉन्ड हो जाइछि, तो आउ तारो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नाही. So that means as you can see in the diagram, carbon रो bond pair अछि केतेटा? चारिटा, because carbon is forming 4 bonds. आउ चारिटा बॉन्ड हे सरला परे कार्बन रो आउ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाही, so it has no lone pairs. तो 4 plus 0 मिसिकी हेला 4. तामाने in the molecule of methane, carbon has octet. Now this octet, although it's a desirable configuration, एटा सबु बेले अटेन हबो तार किछि ग्यारंटी न थाए. There are also many molecules जोठी कि गोटे एटम रो octet अटेन न हेई पारे. The simplest example would be a molecule of hydrogen, H2. Hydrogen case रे कोन होउछि देखो, there are 2 hydrogen atoms which are bonded with each other. Now hydrogen रो electronic configuration is 1s1. तो 1s1 माने हाइड्रोजन रो जस्ट गोटिए इलेक्ट्रॉन अछि, ताको यूज करिकि से बॉन्ड फॉर्मेशन करिछि. तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस रे अदर हाइड्रोजन हैज आल्सो गिवन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ए बॉन्ड टा फॉर्म हे गला दीटा इलेक्ट्रॉन को नेकी. सो फॉर ईच हाइड्रोजन इफ यू एनालाइज, एडी हाइड्रोजन रो बॉन्ड पेयर केता अछि? दे हैव जस्ट 1 बॉन्ड ईच, सो बॉन्ड पेयर गोटे अछि. आ से गोटे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रे यूज हे सरला परे आउ तो हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन नाही. So lone pair on hydrogen is 0. तो इठी मार्क करो bond pair lone pair मिसिले 1 होउची. It is not 4. So hydrogen in this case is not attaining octet. But H2 is a stable molecule. So you should not mistake octet like a very rigid rule. Attaining octet is desirable, but जदि octet attain न भी ही परला, then also it's okay. Such molecules can exist. So out of this discussion, our objective is to figure out whether a particular atom has octet in its configuration or not. तुमको जदि गोटे molecule रो structure दे दिया गला, so that तमे bonds and lone pair रो situation टा जानी परुचो, ताहले ताकू analyze करिकि तमे कहि परिबा दरकार जे गोटे particular atom octet attain करिछि ना नाही. ए octet related आहुरी अधिका discussion मध्य आमे आगामी videos रे करिबा. Now let us talk about another concept which is called a concept of formal charge.
तो फॉर्मल चार्ज रो डेफिनेशन होची इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑन एन इंडिविजुअल एटम व्हेन इट इज पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये चार्ज टा कौन बुझिबा पई गोटे एग्जांपल नबा। वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल with a formula O3. So as you can see in this diagram, this is a molecule of ozone. एथरे तीनटा ऑक्सीजन एटम अछि आ ऑक्सीजन एटम भितरे को टाइप रो बॉन्ड अछि कहारो केतटा लोन पेयर अछि इट इज ऑल शोन हियर। तो लेट मी रीड्रॉ दिस मॉलिक्यूल इन अनदर सिंपलर फॉर्मेट। स्ट्रेट लाइन रे तीनटा ऑक्सीजन एटम को ड्रॉ कर देबा जहा ऊपर जतिकिटा लोन पेयर अछि जेमति चित्र रे देखा जायछि ताको सेमति रिप्रेजेंट करबा। So now this is a molecule of ozone. Now formal charge on each oxygen atom means we have to find out what is the charge on individual atoms. तो एई एटम ऊपर जेतिकी चार्ज थिबो नेसेसरी नुह जे नेक्स्ट एटम ऊपर भी सेतिकी चार्ज थिबो। So we have to calculate formal charge atom by atom on an individual basis. तो तार कैलकुलेशन केमती हबो? इट्स वेरी सिंपल। धरो लेफ्ट ऑक्सीजन को देखो, लेफ्ट साइड रे जो ऑक्सीजन टा रहिची सी दीटा बॉन्ड फॉर्म करची। ईच बॉन्ड पाई ऑक्सीजन मस्ट हैव यूटिलाइज्ड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। आउ बॉन्ड पाई गोटे सेकंड इलेक्ट्रॉन जो दरकार दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय अनदर ऑक्सीजन। तो से इलेक्ट्रॉन टाको देखनी, वी आर राइट नाउ लुकिंग एट इलेक्ट्रॉन्स दैट बिलोंग टू दिस ऑक्सीजन। तो ए ऑक्सीजन रो गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन एठी ईच बॉन्ड पाई यूटिलाइज हैला। तापरे आहुरी दीटा लोन पेयर अछि। तामाने मु जदि एई ऑक्सीजन एटम टाको देखुची बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, तार आउटर मोस्ट शेल की वैलेंस शेल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन तुमको देखा जाउची? इट इज 1 2 3 4 5 6। सो दिस ऑक्सीजन एटम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑक्सीजन एटम? ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रो हमें जानिचे ऑक्सीजन रो आउटर मोस्ट शेल रे 6टा इलेक्ट्रॉन थाए। तो ए ऑक्सीजन रो जदी 6टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछि, देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। 6टा रहबा कथा 6टा अछि। सो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट चेंज्ड, ताहले तमे कहि पारो ए ऑक्सीजन ऊपर जो चार्ज थिबो दैट मस्ट बी 0। चार्ज केते बेले एक्वायर हबो? जदी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमी जिवो और बढ़ी जिवो। If the number of electron decreases, the atom acquires a positive charge. If the number of electrons increase, then the atom can acquire a negative charge. तो एठी जेहेतु हमरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रे किछि भी चेंज हेइनी, तो एटम ऊपर चार्ज भी किछि रहिबनी। So the formal charge on this oxygen atom is 0. Now let us analyze the next oxygen atom. तो next ए जो oxygen atom अछि तार हमें देखुचे तीनटा बॉन्ड हेछि। तो for each of these bonds, this oxygen must have used one electron out of its system. और ता सहित bond formation परे गोटे lone pair भी अच्छी देखुच। So if we now look at how many oxygens this atom had before forming bond, you can take a simple count: 1 2 3 4 5 electrons. So this middle oxygen atom has 5 valence electrons. Now oxygen is supposed to have 6 valence electrons. तो जदि ए ऑक्सीजन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखुछ 5 अछि, ता माने इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस। तो तार अर्थ ए ऑक्सीजन एटम रो निश्चय गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस हेछि। तो इफ देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आउट ऑफ द एटम, द चार्ज ऑन द एटम must be equal to +1. So the formal charge on this oxygen, which is the middle oxygen, is +1. तो ठीक सही मैनर रे if you evaluate the charge on the last oxygen atom, let's see. तो for this oxygen atom there is one bond, तो सेठी से गोटे इलेक्ट्रॉन यूज करथिबो, बाकी तारो तीनटा लोन पेयर भी अछि। So if you look at this system now, this oxygen atom has how many electrons? 1 2 3 4 5 6 7. So this oxygen atom has 7 valence electrons. तो जदि गोटे ऑक्सीजन रा 7टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछि जोटा कि नॉर्मली 6 रहिबा कथा, ता माने इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, and having 1 extra electron means this oxygen atom has gained 1 electron. So therefore the charge on this oxygen
must be equal to -1. So this is how we can evaluate the formal charge on any atom when it is part of a molecule. तमे atom by atom सेही atom रो total केतरा electron अछि ताको count करिकि देखिबो. If the number of electrons is normal, there is no charge. If the number of electrons is less than normal, then it will have a positive charge. If the number of electrons is more than normal, then it will have a negative charge. तो ए जो ओजोन मॉलिक्यूल में नहीं थिले एथरा हमें कहि परिबा formal charge on this oxygen is 0, formal charge on this oxygen is +1 and the formal charge on the last one is -1. तो एठी आ गोटे कथा ऑब्जर्व करो जदि हमें सबु एटम रो फॉर्मल चार्जेस को ऐड कर दबा 0 +1 -1 ए तीनटा जाक चार्ज को जदि ऐड कर दबा दिस इज कमिंग आउट टू बी 0. तो दिस 0 is the net charge on O3. So this forms a generalized concept that if you add the formal charge of all atoms within a molecule, that equals to the net charge on the molecule. तो हम एमती कहि परिबा जे net charge on a molecule is equal to summation of formal charge of all atoms. तो गोटे molecule भितरे जेतरा भी atom थाउ जदि समस्तंगर फॉर्मल चार्ज को हमें ऐड कर देबा टोटल सम टा मॉलिक्यूल रो नेट चार्ज सहित समान हबो. नेट चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल कैन बी 0 और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एटम्स रो फॉर्मल चार्जेस केते केते अछि. तो एई वीडियो रे हमें जो दीटा कांसेप्ट डिस्कस करले, वन इज द कांसेप्ट ऑफ ऑक्टेट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्टेट एंड द कांसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस. এই জিনিসটাকে ঠিক সে বুঝো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট. পরীক্ষারে বি এথরু কোশ্চেন্স আসে. নাও লেটস সি ওয়ান মোর এক্সাম্পল অফ দিস ফর্মাল চার্জ. লেট us টেক আ ইউনিক আয়ন. তার ফর্মুলা হচ্ছে N3-. দিস ইজ নোন এজ আ আজাইড আয়ন. তো N3- র স্ট্রাকচরটা কেমতি যদি আমি ড্র করিবা, देयर आर 3 নাইট্রোজেন এটমস and they have double bonds between them. এই ভলিয়া বন্ডস রইছি. The end nitrogens have 2 lone pairs each. और मझी नाइट्रोजन रो लोन पेयर किछि नाही. This is the situation or this is the structure of azide ion. तो एबे जदि azide रे हमें इंडिविजुअल नाइट्रोजन रो केते केते फॉर्मल चार्ज ताको कैलकुलेट करिबा. लेट्स सी हाउ टू डू इट. धर हम लेफ्ट साइड रो स्टार्ट करूची दिस नाइट्रोजन. तो दिस नाइट्रोजन हैज फॉर्म 2 bonds. तो ईच बॉन्ड रे से दीटा इलेक्ट्रॉन यूज करथिबो, गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन यूज करथिबो. ताकू करला परे तार आहुरी दीटा लोन पेयर भी अछि. तामाने दिस नाइट्रोजन सीम्स टू हैव 1 2 3 4 5 6 6टा इलेक्ट्रॉन अछि. तो इफ नाइट्रोजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इज इट द नॉर्मल सिचुएशन? नाइट्रोजन रो जदि तुमे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखिबो, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची 1s2 2s2 2p3, जो थरे कि एटा हला हमर वैलेंस शेल. तो वैलेंस शेल रे 2 3 है कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स अछि. बट दिस नाइट्रोजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो जदि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अछि, द चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन शुड बी -1. जो एटम रे एक्स्ट्रा गोटे इलेक्ट्रॉन अछि, से गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करछि, सो इट हैज एक्वायर्ड अ -1 चार्ज. तो सही मैनर रे इफ वी मूव टू द नेक्स्ट नाइट्रोजन एटम, ए नाइट्रोजन रो कोन हेछि देखो, इट हैज फॉर्म्ड 4 bonds. तो ईच बॉन्ड रे से गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करछि. आ सेति की कर साला परे तार आ लोन पेयर नाही, देयर इज नो लोन पेयर. तो ता माने दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन हैज 4 electrons in the valence shell. So this nitrogen has 4 valence electrons. तो if it has 4 valence electrons, ताहले तार चार्ज केते थिबो? तो 5 जगह जदि 4 इलेक्ट्रॉन्स अछि, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस, और तमे कहि पारो इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. तो जदि गोटे एटम गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करिछि, तार चार्ज थिबो +1. Similarly, if we evaluate the situation on this nitrogen, as you can see in the diagram, this nitrogen is in a similar situation as the first one. First nitrogen जमते दीटा बॉन्ड आउ दीटा लोन पेयर थिला, लास्ट रो भी सेया अछि, दीटा बॉन्ड अछि, दीटा लोन पेयर अछि. So
the formal charge of this nitrogen and the last nitrogen must be same. The formal charge of the last one is also -1. ताले एबे देखो जदि आमे इंडिविजुअल तीनटा जाक नाइट्रोजन रो फॉर्मल चार्जेस को ऐड करिबा तो फर्स्ट रो अछि -1, सेकंड रो अछि +1 और थर्ड रो अछि -1. So if you add these three numbers, the sum is equal to -1. And -1 is the net charge on azide ion. Azide ion रो चार्ज आमे फॉर्मूला लिखिचे N3- तमन तार नेट चार्ज टा -1 अछि. तो this is a principle which you can always follow. जदि गोटे स्ट्रक्चर रे सबु एटम रो फॉर्मल चार्ज हमको जणा अछि ताले हमें सही मॉलिक्यूल कि सही आयन उपरे नेट चार्ज केते थिबो ताको भी प्रेडिक्ट कर देई परिबा.